Hello friends. Last time we discussed about the emotional intelligence, importance of emotional intelligence and how we can be aware about our own emotional intelligence. Though IQ is important, but EQ is equally important. Before directly coming to the concept which we are going to discuss today, primarily emotional awareness and accurate self assessment, which is very important. It's part of emotional intelligence. I would like to discuss about an incident which was well narrated by none other than Mr. APJ Abdul Kalam. He talked about the first launch of our own launching vehicle in 1979, when India was about to put the first satellite in the orbit. He was the project head, and the chairman of ISRO was Mr. Satish Dhawan. Mr. Kalam said that it was almost about to take off, and computer gave its own, assessment about leaving the, this launching. Computers signaled abort the mission. It was about to take off from the Sriharikota launching pad. Then Kalam consulted the people around him, and within few minutes, they had to decide that they are going to launch it. So they put this, launching vehicle on the manual mode, and it got let it off. After 300 seconds, mission got failed. Mr. Kalam was in, really in a very, very low mood, disturbed. Obviously, he was the project head. At that time, Mr. Satish Dhawan came to him and asked him to go along with him to attend the press conference. When they entered the press hall, Mr. Satish Dhawan went to the dais and addressed the whole media about the failure. He accepted it, that it is our team, and next time we are going to become successful. There were few flaws, but yes, our team is always there, and we are going to definitely complete this task. As Mr. Kalam said, after 1 year, again Mr. Kalam got selected for as a project head, again, and that was also done by Mr. Satish Dhawan, because when Mr. Kalam asked him, why me again, he said, you have had got the experience of, one big project where you got, not failed, but where you tried your level best. And 1980, after 1 year, it was a success. The satellite was put into the orbit. Satish Dhawan asked Mr. Kalam to climb the dais and address the media. Here is the lesson. Leaders come forward when their teams are disheartened, and they take the charge, they take the responsibility. And when team is a winner, leaders tell them to go and celebrate it. This is a big lesson. And my dear friends, you tell me, who can do such kind of, generous and compassionate hearted action? Only an emotionally intelligent person. Yes, Mr. Satish Dhawan completely showed that he is a man with balanced emotions. When it is a failure, he is there to handle. When it is a success, he is going to, allow other people to take the credit. पर क्या आज भी जितनी जितनी बड़ी कंपनी, हालांकि इतने अच्छे लीडर्स हैं,
Mr. Ratan Tata, Azim Premji. I mean, list goes on. But my dear friends, these all were well balanced emotionally people, emotionally intelligent people. So, dear friends, this particular example is actually making the difference between a person who is emotionally illiterate and the person who is emotionally literate. Yesterday we talked about emotional, how we assess, how we, assess our emotions. Now, after assessing our emotions and how these emotions erupt, the same book, it's a different book though, it's a different book, again, written by Daniel Goleman. He talks about, after emotional self-awareness, he talk about accurate self-assessment. Because emotional assessment simply means my emotions and others' emotion. It's very important. हम अक्सर अपनी भावनाओं को समझने में गलती करते हैं. कई बार तो हम इतने अवेयर भी नहीं होते कि क्या मेरी भावनाएं मेरे जीवन में किसी किस्म का फर्क डाल रही हैं, या मेरे वर्किंग प्लेस पर क्या मेरे टीम मेंबर्स या मेरे घर में मेरे फैमिली मेंबर्स मेरी भावनाओं से अफेक्टेड हो रहे हैं. ये दो अलग अलग चीजें हैं. फर्स्ट अवेयरनेस अबाउट माय इमोशंस एंड हाउ लॉन्ग दोज इमोशंस आर mentally intervened and turn into feelings and prolong. So first is मेरी भावनाएं किस तरह से मुझे इफेक्ट करती हैं, और दूसरा मेरी भावनाओं से दूसरे किस तरह इफेक्ट होते हैं. ये दो अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है. हम अक्सर इतना जान लेते हैं कि यार मुझे गुस्सा आता है, मैं डिसअपॉइंटेड होता हूं, मैं लो फील करता हूं, मैं कभी कभी मैनिएक हो जाता हूं, कभी कभी मैं बहुत ज्यादा नीचे चला जाता हूं. लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि मेरे इस बिहेवियर से मेरे साथ के लोग, वेदर इट इज माय फैमिली मेंबर्स और इट इज माय दे आर माय टीम मेंबर्स, कैसा वो महसूस करते हैं. दैट कम्स अंडर इमोशनल अवेयरनेस. सेकेंड थिंग इज वेरी सिंपल, एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट. एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट अब देखिए कैसे होगी. उसके 4 स्टेप्स हैं. लिसन फर्स्ट, लिसन सेकंड, मेडिटेट थर्ड, एसिमिलेट एंड फोर्थ, रिजल्ट्स. सबसे पहले श्रवण, मनन, और उसके बाद आत्मसात और नतीजा. इट्स वेरी सिंपल कि मुझे हर चीज पे मेडिटेट करना है. फर्स्ट, I have to be emotionally aware, and second, I have to be, I have to be known to my own accurate self-assessment. That's very important. Because if I say that my first job, अगर मैं एक लीडर हूं, and leader can be at any place, you can lead at your home, you can be a supervisor and you're a leader, you can be a manager and you have supervisors team, and you can be a general manager and you have a team of managers, and you can be a vice president where you have general manager, regional manager. You have a team with you always. And in the home also, if you are leading, if you are head of the family, wherever what your place is. So सबसे पहला काम है अपने आप को जानना. क्या मैं खुद को जानता हूं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है. डू आई नो माई सेल्फ? बिकॉज इससे पहले कि मैं दूसरों को जानूं, मुझे खुद को जानना है. जब मैं खुद को जान जाऊंगा, मैं धीरे धीरे दूसरों की इमोशंस को भी समझने लगता हूं. यह भी हमने एक वीडियो में इसके बारे में बात की है. दैट इज कॉल्ड एम्पैथेटिक एटीट्यूड. दैट वी विल टॉक अगेन लेटर ऑन in the next coming videos. So from here, when I talk about my feelings, then I talk about, where do I limit myself? In today's leadership, whether it is a political leadership, corporate leadership, or social service, wherever you go, in any sphere you go, me first,
you last. Or I know more than you. Last but not least. We are not able to say this, I don't know. कई बार हमें हमारी वर्क प्लेस पे, हमारी फैमिली में एक बेटर आइडिया देता है. आपको मालूम है दोस्तों, जो इमोशनली इलिटरेट होते हैं वो दूसरों के आइडियाज को कई बार रिजेक्ट कर देते हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर कोई रिजेक्ट करता है. कई बार रीजन दोज पीपल आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट, क्योंकि वो डिसअपॉइंटमेंट फेस नहीं कर सकते. अगर उन्हें कोई कहे कि यार उस इंसान ने तुमसे बेहतर आइडिया दे दिया या वो इंसान तुमसे बेहतर कर रहा है, ये नहीं कर पाते. यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार परफॉर्मर्स एंड एवरेज परफॉर्मर्स? Star performers always know their limitations very well, and they always know to whom they are going to work, with whom they are going to work, and those people do not have those limitations. That is the difference between a star performers and average performers. Reason, star performers हमेशा ये जानता है कि मेरी limitations क्या है, और ये भी जानता है कि मेरी टीम में ये लिमिटेशंस किसको नहीं है, और फिर वो मिल के काम करते हैं एंड देन दे बिकम स्टार परफॉर्मर्स. लेकिन इसके लिए फ्रेंड्स, हाईली इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन, यू नीड दैट काइंड ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस जहां आप इन दोनों चीजों में फर्क देख सको कि कहां मेरी लिमिटेशंस खत्म होती हैं और कहां दूसरों की लिमिटेशन टूटती हैं. वहां पर एक टीम वर्क आता है. द जर्नी दैट लीड्स यू टू द सक्सेस, द जर्नी विच लीड्स यू टू द सक्सेस इन द वेरियस प्रोजेक्ट्स, it starts with your own aspirations, your own values, and the values and aspiration of your own having alignment with the value and aspiration of your company. और ऐसा ही फैमिली में होता है कि अगर आप अपनी वैल्यू और एस्पिरेशंस को रखना चाहते हैं, आपको तभी सक्सेस मिलेगी अगर आप अपनी फैमिली मेंबर्स की वैल्यूज और एस्पिरेशंस को भी साथ रखते हो, अलाइनमेंट में रखते हो. It's a wonderful concept, dear friends, that how, first of all, I have to see my own emotional awareness. Once I know about my emotional awareness, I need to see my emotional awareness. Afterwards, I need to know myself accurately, that how do I behave, how do I react. Stimulus comes, emotions erupt, how do I channelize it? मैं उसे किस तरह से चैनलाइज करता हूं और किस तरह से उसे मैं सबड्यू करता हूं. सुप्रेस नहीं करना, बिकॉज वंस इमोशंस आर सुप्रेस्ड इट टर्न इनटू डिजीजेस. तो इमोशंस को दबाना नहीं है. अगर हम इमोशंस को दबाते हैं तो वो बीमारी बनती है, लेकिन अगर हम इमोशंस को चैनलाइज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कैन रिप्लेस हेट्रेड विद कंपैशन. अगर कंपैशनेट एटीट्यूड आ गया एक लीडर में, एक फैमिली मेंबर में, तो समझ लीजिए आसपास की बहुत सी समस्याएं खत्म. लेकिन कंपैशन वर्ड केवल वर्ड नहीं है, इट्स अ वर्ब. ये एक वर्ब है. वन हैज टू डू इट, वन हैज टू फील इट. सो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट your emotional awareness, second your own accurate self assessment. When these two things come together, your confidence level is very high, and that high competition or that high confidence take you to a different realm, take you to a different height, because now you are enough confident to take good decisions. And sometime, even if I'm a subordinate, if I'm a manager, I can talk to the general manager and I can tell them what is right and what is wrong, because telling somebody, giving suggestions somebody
is not right or wrong. It's your duty. It's our duty. Wherever I'm working, I need to tell what is right and wrong. But do I have the confidence to tell that? For that, I have to be emotionally strong. My EQ has to be revived. So, my dear friends, let's rediscover ourselves, because emotions were, how to handle emotions were never told in the schools or colleges. कभी नहीं. Physics, chemistry, mathematics और ये सब history, geography, even I studied economics and psychology, ये सब बताया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि दिलबाग how to handle your emotions. क्योंकि हमें तो लगता था being emotional is great. फिल्में देखते थे, दीवार, एंग्री यंग मैन. आप ये देखिए कि 70, 80, 90 के दशक में छाए रहे बच्चन साहब, एंग्री यंग मैन. सो वन हैज टू बी एंग्री. इफ यू आर यंग मैन, यू नीड टू बी एंग्री. राइट वे. उस वक्त वो दौर था, हिंदुस्तान आजाद हुआ था 60 और 70 के दशक में. जब इस तरह की फिल्में बनी तो उसमें एक एंग्री यंग मैन, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है, तो हर जगह लाइन है, नौकरी के लिए, इसके लिए, उसके लिए, घर की बीमारी, गरीबी. तो हमने एक इमेज बना ली, है ना. और फिर लेटर ऑन वो इमेज चेंज होनी होगी, डिफरेंट. अब मीडिया में दिखाया जाता है कि यस, फिल्मों में आप मौज करो, मस्ती करो, ये करो, वो करो, दारू पियो, सब कुछ करो, इमोशंस को बहने दो. नो, इमोशंस इतनी सस्ती नहीं है कि वो बहें. इमोशन एक ऐसी चीज है जिसे अगर हम पाल लेते हैं, अगर हम उसे आत्मसात कर लेते हैं, तो कलाम साहब बनते हैं, तो इंजीनियर श्रीधरन बनते हैं, तो सतीश धवन जी जैसे महान साइंटिस्ट बनते हैं, जो हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बदलने की हिम्मत रखते हैं. रीजन, उन्होंने इमोशंस को बहने नहीं दिया. वेदर इट वॉज कंपैशन, लव, कोऑपरेशन, रेजिलेंस, so many things, because they knew very well how to handle their emotions. So dear friends, we talked about few things which will be very helpful for us for the next coming episodes or next coming videos. आज इतना ही. Next video में we would like to discuss about channelizing these emotions, because you understand your emotions, you can assess it, you can assess yourself as a leader, you can work in that particular phase. But now there are a number of tools to get yourself emotionally strong. Next time, friends, we'll be discussing those things. By that time, have a nice days ahead. Thank you very much.